So today we are going to do sexual reproduction in flowering plants, MCQs for class 12th, for board exams and for Neet as well. So let's begin. Plant embryo develops from zygote. एम्ब्रियो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट में एंड एम्ब्रियो ऑफ फ्लोरिंग प्लांट इज ऑलवेज ये डिप्लॉयड होता है. सो लेट्स सी. जाइगोट जो है वो डेवलप होगा प्रो एम्ब्रियो में एंड देन ग्लोबुलर में एंड देन हार्ट शेप्ड एंड देन इट विल बी अ मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ अ डिप्लॉयड. Plant embryo is a mass of miniature plant. D is the answer. Stamen is a modification of microsporophyll. Then zygote is formed inside the embryo sac या female gametophyte. So answer is this. A microspore is a male gamete या first cell of male gametophyte. Microspore इसी से होती है microsporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो इसी सेल से होती है. नाउ एन एंथर कंसिस्ट ऑफ एक एंथर जो है उसमें क्या होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. एंथर में क्या होता है 2 लोब होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. नाउ सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑलवेज डिप्लॉयड. एम्ब्रियो sac is produced from megaspore nucellus. So what is nucellus? Nucellus is a mass of cells enclosed in an integument has abundant food reserve. So this is embryo sac. Then ये nucellus आ गया. Outer integument और inner integument ये चलेजल पोल होता है और यहाँ पे हाइलम फनिकल माइक्रोपाइल जो एक होल होता है. हाँ ये हो गया माइक्रोपाइलर पोल. An egg apparatus contains egg apparatus में क्या होता है एक एग होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं. 2 synergids are there and 1 egg cell is there. Egg cell ये है embryo sac. Here is tubular cell. यहाँ पे होती है एंटीपोडल्स. 3 एंटीपोडल्स होती है. एंटीपोडल्स और ये एंड कौन सा होता है इसी से याद रखना है कि ये चलेजल एंड होता है और ये माइक्रोपाइल एंड होता है. माइक्रोपाइलर एंड. In angiosperm, the endosperm nucleus is triploid. Female gametophyte is also known as female gametophyte को हम बोलते हैं embryo sac. So D is the correct answer. Embryo sac contains 1 egg. एक egg होता है उसमें और 2 synergid होते हैं, 2 polar cell, 2 polar nucleus होते हैं, 1 polar cell होता है और टोटल क्या होते हैं 8 nuclei और 7 cells. Carpel is formed of 3 पार्ट. सो कार्पेल में कौन से पार्ट होते हैं स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी. ये स्टिग्मा हो गया देन दिस स्टाइल एंड देन ओवेरी और ये स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं एंथर और एक फिलामेंट. एंथर और एक स्टिग्मा नहीं फिलामेंट. दिस इज एंथर और जिसमें 2 लोब होते हैं और दिस इज फिलामेंट. नाउ the arrangement of florals on the floral axis is known as anthology. That you have to remember. The unit of female reproductive body in flower is carpel या pistil भी बोल सकते हैं इसे हम. pistil इसका दूसरा नाम होता है. Now after fertilization the ovule develops into ovule जो होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है और ओवेरी जो है वो फ्रूट में. सो इससे हमारे 2 क्वेश्चन हो गए. फ्रूट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ओवेरी. The seed coat develops from outer integument. Nucellus in seed is represented by pericarp. Pollen tube enters the embryo sac through micropyle.
पोलन ट्यूब एंटरिंग इन एम्ब्रियो सेक हैज दो मेल गेमेट होते हैं इसमें पोलन ट्यूब में. In flowering plants, fertilization occur in embryo sac. Okay, so here we are doing MCQs, and if you want to complete lecture, so you can check the link in description box of sexual reproduction in flowering plant class 12th. जो लेक्चर है वो बनाया गया है और यहाँ पे सिर्फ हम MCQs करेंगे. So the formation of zygote without the act of syngamy is called as parthenogenesis. जिसमें क्या होता है fertilization नहीं होता. Parthenogenesis एक ऐसी process होती है that is without fertilization. Which phase of the life cycle is dominant in the individual of angiosperm? Sporophyte होता है वो dominant phase होता है life cycle का. The process by which seedless fruits are produced are known as parthenocarpy. Parthenogenesis में fertilization नहीं होता और ये होती है ज़्यादातर एनिमल्स में. फ्लोर इज अ modified shoot. पोलन ट्यूब एंटर्स द माइक्रोफाइल थ्रू फीमेल गेमेटोफाइट, ये हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट. फर्टिलाइज्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म. ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन. इन फिकस पोलिनेशन अकर थ्रू. फिकस जो एक प्लांट है उसमें क्या होता है पोलिनेशन इंसेक्ट से होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड इज डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल. सीड जो है वो डेवलप होता है ओव्यूल से और फ्रूट होता है ओवेरी से. क्रॉस पोलिनेशन इज नॉर्मली अ मोर बेनिफिशियल बिकॉज जो सेल्फ पोलिनेशन है उससे आ सकता है इनहिबिशन ब्रीडिंग. जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किससे ज़्यादा सेल्फ पोलिनेशन अगर होगा तो उससे आ जाएगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. नाउ पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा. पोलन ग्रेन्स यहाँ ये जो स्टिग्मा पार्ट है वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं. अगर स्टिग्मा जो है उसका अंदर आने देगा तो फिर वो स्टाइल से पोलन ट्यूब बनाएगा और देन ओवेरी तक पहुँच जाएगा. एन एंथर इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम. The source of food for developing embryo is endosperm. Out of megaspore tetrad, the functional megaspore is chalicer megaspore. And you can, one thing, you can tell me the topic in a comment section that you want for Neet and for class 12 or maybe any other topic, any book summary or something else. Or I'm a BSc student, first year student, so that also you can tell me the topic. BSc फर्स्ट ईयर का भी आप कोई भी टॉपिक बता सकते हो तो मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ. नाउ माइक्रोपाइलर एंड लेग्स. माइक्रोपाइलर एंड में इंटीग्मेंट नहीं होती. द लार्जर सेल ऑफ अ पोलन ग्रेन विद इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस इज वेजिटेटिव सेल. दो टाइप की सेल होती है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव. जनरेटिव जो है वो दो गैमेट्स बना देती है, टू गैमेट्स बना देती है ये. हाउ मेनी मेगास्पोर मोथ सेल आर प्रोड्यूस इन द न्यूसेलस? 1. हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड इन अ मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट? सो 7 सेल्स होती है, हमने पहले ही डिस्कस किया है, और 8 न्यूक्लियाई होते हैं. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम प्लांट इज कॉल्ड एज ज़िटोनोगेमी. The uppermost and largest cell of the suspensor which remain in contact with apical cells is hypophysis. Which one of the following cell is diploid? So secondary nucleus जो है वो diploid होता है. Suspensor is produced from small upper basal cell. Which structure pushes the developing embryo toward the endosperm to get nutrition? Suspensor. Development of male gametophyte begins. मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट बिगिन होगा बिफोर पोलिनेशन. 2 to 3 cell male gametophyte start in further development after pollination on the stigma. Which part of the male gametophyte degenerates before fertilization? Tube nucleus.
Which one of the following is the basal part of ovule? Chaliza. In digote embryogenesis, the first division of zygote is generally transverse. Two male gametes are haploid. The innermost layer of wall of microsporangia is called as septum, जो कि nourishment provide करती है. Pollen grains represent male gametophyte. Septum provides nourishment to the pollen grains. In triple fusion, how many male gamete participate? One. Germ pores are actually apertures in exine. एक्साइन में कुछ पोर्स होते हैं जहाँ पे स्पोरोलिन स्पोरो जो स्पोरोलेनिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और जो प्रोटीन उसका जो प्रोटीन से बना हुआ होता है. रेडिकल टिप इज derived from how many haploid nuclei are involved in double fertilization? 5. Endothecium in anther helps in the essence of anther. इन टाइम जो पोलन ग्रेन की वो बनी हुई होती है पैक्टिन और सेलुलोज की. जो विच ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल जो ना ही एसिड से कुछ हो सकता है इसको स्पोरोपोलेनिन. स्टाइल इज पार्ट होता है अ डेलिकेट फिलामेंट होता है ये कार्पेल का पार्ट है. Nucellus is a mass of parenchyma cells. Which one of the following is an example of mitosis? Microsporogenesis. So at least you will be getting at least 30 to 40 questions you will be getting from this lecture in your test, not in Neet exam. But at least 10 questions you will be getting from this lecture. So watch it carefully. Typical anther normally consists of. एंथर किसका बना होता है? दो लोब होते हैं उसमें और चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. During development of monosporic development of embryos, the nucellus of a fundamental megaspore divide 3 times. Then cross-pollination has an advantage of genetic recombination. Unisexual flowers prevent self-pollination. The function of a filiform apparatus is filiform apparatus क्या करता है? ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को उसकी एंट्री में हेल्प करता है. Now, which one of the following is an example of free nuclear endosperm? Coconut fodder. The protective cover of a radicle in maize seed is called as coryza. In angiosperm, the endosperm is formed in embryo's egg. Stamens show homology with stamen or microsporophyll. Now, पेडिसिल जो होती है फीमेल फ्लावर की वो कोयल करती है आफ्टर पोलिनेशन इन वेलिस्नेरिया जो प्लांट है उसमें. The arrangement of the haploid nuclei in the normal dicot embryo egg is 2-3-2. In the flowering plants, male and female gamete both are non-motile. दोनों ही नॉन मूवेबल है, दोनों ही मूव नहीं कर सकते. इसीलिए कुछ हमें एजेंट चाहिए होते हैं पोलिनेटिंग एजेंट जो कि पोलिनेशन करा सके. Wind pollination requires that pollen grains are light and dry. Future sporophytic generation in a seed is embryo. Scatellum is cotyledonic. Which one of the following floats in a cytoplasm of vegetative cell? Generative cell जो वो float करती है vegetative cell में. Mature pollen grain contain दो cell होती है mature pollen grain में. Pollen tube is formed by intine जो है वो form करती है pollen tube. Single ovule जो वो produce करता है one female gamete. Embryo sac is formed inside ovule. Proembryo is a four-celled structure. Suspensor is made up of 20 to 25 cells. Root cape of the embryo develops from hypophysis. Uh, the hilum of a ovule represents the junction between funicle and ovule. Funicle and जो ovule होता है उसके बीच होता है हमारा hilum.
Which layer of the wall of microsporangia is made up of fibrous layer? Endothecium. Out of four set of appendages of typical flower, the outer two sets are sterile. Proximal sterile part of stamen is called as filament. एक एंथर होता है और एक filament. This is filament. The sterile region present between stigma and ovary is style. Style जो है वो sterile है, मतलब fertile नहीं है. ये stigma है और ये ovary है. Opposite end of micropylar end is chalazal end. इसी से हमें याद रखना है चेलेजल एंड और या एंटीपोडल्स. एंटीपोडल्स की साइड क्या होगा? चेलेजल एंड होगा और अपोजिट विल बी माइक्रोपाइलर एंड और वहां पे क्या होगा? माइक्रोपाइल होगा. When pollen grains are not transferred from anther to stigma in a flower due to physical barrier is called as hercogamy. The asexual production of seed is called as apomixis. Asexual होता है ये. Perisperm is persistent of nucellus. The root cell of wheat plant has 42 chromosome अगर what will be the number of chromosome in synergid cell? 21 half होगा 42 से. The plant part which consists of two generation one within the other is unfertilized ovule. Last but not the least, the pollen tube usually enters the female gametophyte through one of the synergid. एक या दो synergid होते हैं तो उनमें से कोई भी जो है एंट्री करा देता है pollen tube की. Thank you so much. Stay tuned with Lecture Catalyst and keep watching my videos and keep learning. And tell me the topic in a description box if you want me to make video and to tell me what I have to improve to make good content. So thank you.